morning. Uh, Today we are going to look at the differential and integral form of rate law, and how the concentration of a reactant varies uh, if it is following a certain order of reaction. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं तो हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और sorry reactant is going to vary with time. जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो कैसे वेरी करेगा, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू लुक एट द half life of the process or half life of the reactant under consideration. ठीक है, so देखो डिफरेंशियल रेट लॉ का एक तो मैंने आप लोग को बताया कि व्हाट इज इट्स यूजेबिलिटी, वो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके, लास्ट क्वेश्चन व्हिच वी सॉल्व, ये वाला जिसके थ्रू हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स निकाला एंड ओवरऑल रिएक्शन के लिए निकाला ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. दैट इज वन ऑफ द यूजेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉज. ठीक है, ये डिफरेंशियल रेट लॉ जो है, ठीक है, इसी से बेसिकली मुझे ये ऑर्डर का पता चला. ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स किया मैंने और डेटा को फिट इन किया डिफरेंशियल रेट लॉ में, तो आई केम टू नो. अभी इसके अलावा तीन और मेथड्स होते हैं, तीन और एनालिसिस होती है. ठीक है, एक होता है इंटीग्रल रेट लॉ की एनालिसिस. ठीक है, उसके थ्रू भी हमको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का पता चलता है. उसमें बेसिकली रेट कितना चेंज हो रहा है, सॉरी, या कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, दो पैरामीटर्स को ना नोट करके सिर्फ एक ही चीज नोट करना होता है मोस्टली. सॉरी नहीं, एक नहीं, दो, उसमें भी टाइम और कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, ये दोनों चीजें नोट करनी होती है हमको. बट यहाँ पर अगर चेंजेस बहुत छोटे हैं ना, डिफरेंशियल में चेंजेस बहुत छोटे हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल. इंटीग्रल फॉर्म में चेंजेस छोटे हैं तभी हम हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, इंटीग्रेट करके जो फॉर्म मिलता है इक्वेशन कंसंट्रेशन का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो देयर वी कैन हैंडल. द सेकेंड थिंग विच वी हैव इज, in order to analyze the rate equation, is half life of a substance. half life क्या है और half life की डिपेंडेंसी कंसंट्रेशन पे कैसा है, उसके बेसिस पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दोज एस्पेक्ट्स. इसमें सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिफाइन वन थिंग. there is something called half life. Half life of a reactant. This simply means the time in which concentration of reactant
falls down to the time in which concentration of the reactant falls down half of its original or initial its initial value. Initial value. Secondly, there is something called as mean life. The mean or average lifespan of reactive molecule. ठीक है? So ये generally निकलेगा कैसे? We take the sum of life of all the reactant particles. ठीक है? या sum of ये life of all the uh, particles of a reactant divided by total number of particles. ठीक है? मीन लाइफ क्या होगा? Sum of life of particles of a reactant divided by number of particles of a reactant. ठीक है? Now let us consider a zero order reaction. ठीक है? Zero order reaction के लिए there will be some reactant and it will be getting converted into product such that
rate of the reaction is proportional to concentration of reactant to the power 0. ठीक है, zero order reaction का मतलब the rate of the reaction will be varying with concentration to the power 0, concentration of the reactant to the power 0. ठीक है, rate क्या होगा? Rate is going to be minus d concentration of A divided by concentration of divided by T, or differential of concentration of A with respect to T, and that should be proportional to concentration of A to the power 0, or it can be written as the sign of proportionality can be replaced with a constant, the rate constant, and it will turn out to be something like this. Only this thing will be there. This will become 1 and it may not be written. Further solving it, what we are going to get is the concentration may fall between time 0 to t, means from initial concentration of E0 to a final concentration of AT, ठीक है, और where, और ये कॉमन चीज रहेगा, concentration of AT represents concentration of A at time t, or after lapse of time t, after lapse of after time E naught क्या है? Concentration of A at the beginning. So I can write this as concentration of E at time t. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट्स लाइक dx को इंटीग्रेट किया हमने तो क्या हो जाएगा? सिंपली x. Similarly, d of concentration A को इंटीग्रेट किया तो it will be simply concentration of A and under the limits A0 and AT, and माइनस साइन बाहर रहेगा, so माइनस साइन को बाहर कर लेंगे हम लोग, and we can write it as AT minus A0. इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसे लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A अंडर द लिमिट A0 एंड यहाँ पर K इंटू T, और ये लिमिट भी 0 to T रहेगा. दिस विल मेक, ये माइनस साइन को हम इधर लेकर के आ सकते हैं राइट साइड में, तो दिस विल सिंपली बिकम A
at time t minus A at time 0 is equal to minus Kt, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं is equal to concentration of A at time 0 minus Kt. So the variation of concentration of A with time in a zero order reaction is going to look something like this. ठीक है? Let us draw few simple graphs. अगर रेट का concentration के साथ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो how is it going to look for zero order reaction? Rate with concentration of reactant. How is it going to look like? It will be a straight line. ठीक है? And this will be what? This will be the K of the reaction. Rate constant of the reaction. Is it okay? If I am going to plot with the help of this equation, concentration of reactant, versus time graph, how is it going to look like? Is it looking like y is equal to mx plus c? Y is equal to mx plus c. ठीक है? M is equal to minus k. Yes, sir. So it's going to look something like this. It will be a straight line starting from the initial concentration. This will be A0 and slowly and steadily decreasing down to touch zero line at some time t. Okay? Is this okay? ये ग्राफ समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके. और आगे के कुछ और इक्वेशंस हम लोग देखेंगे and then we are going to realize that these patterns are unique. जैसे अगर बाकी चीजें मुझे कुछ भी पता नहीं है और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मैं ये एस्टैब्लिश कर पा रहा हूँ किसी भी तरीके से कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है. ठीक है? रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है? मतलब क्या? मतलब ये कि इनिशियली मैं कुछ भी अमाउंट, कोई एक रिएक्शन है और उसमें कुछ भी अमाउंट ले रहा हूँ, किसी भी अमाउंट से चालू कर रहा हूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो सेम ही रह रहा है. ठीक है? Just by looking at this information, I can very clearly say that it is a zero order reaction. ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक यूनिक इंफॉर्मेशन है. ये इंफॉर्मेशन अकेले ही ये एस्टैब्लिश कर देता है कि दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? We don't need any other evidence for it. Similarly, with time we are going to see that for different order reactions this graph is also unique. ठीक है? कंसंट्रेशन और टाइम का वेरिएशन अगर हम नोट करते हैं, हम उसको प्लॉट करते हैं, if it is coming out to be, if at all it is coming out to be a straight line, concentration versus time graph is coming out to be a straight line like this, it's always going to be a zero order reaction, no doubt in that. Making sense? बात समझ में आ रही है? Third thing, what will be half life of a zero order reaction? ठीक है? और half life of the reactant
following a zero order reaction. ठीक है, so half life क्या हो जाएगा, इसको जनरली हाफ लाइफ को ना हम लोग हाफ लाइफ को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी हाफ से डिनोट करते हैं। मीन लाइफ को जनरली टाउ से डिनोट करते हैं। और ये रेट कांस्टेंट जो है के, रेट कांस्टेंट को जनरली हम लोग या तो के से डिनोट करते हैं या फिर मेनी टाइम्स इसको हम लोग लैम्डा से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में आप देखेंगे उसको लैम्डा बोला जाता है, देयर इज नो रीजन फॉर इट, बस बोला जाता है तो बोला जाता है। सबसे पहले टेक्स्ट में उसी तरीके से रेफर किया गया है, इसलिए उसी तरीके को हम आज भी फॉलो करते हैं, देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट। और केमिस्ट्री में जो था वो के यूज किया गया तो के यूज करते हैं हम लोग, और अदरवाइज है दोनों सेम चीज। सो हाफ लाइफ में क्या था, हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है दैट शुड फॉल डाउन टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना, तो सपोज इनिशियल वैल्यू ऑब्वियसली मेरा ए नॉट रहेगा, हाफ कब होगा उसका, जब एटी बिकम्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू, हाफ आफ्टर lapse of 1 half half life one half life we will have concentration of reactant decreased A naught by 2 value. Therefore हमें सिंपली ये लिख देना है A naught by 2 is equal to A naught minus KT। ठीक है, that implies इसको इधर लेकर के आएंगे तो KT is equal to A naught minus A naught by 2, that is equal to A naught by or time taken is equal to, in order to do this is 1 by K naught by 2, या फिर K is equal to, so this becomes, इस टाइम को क्या बोलेंगे, T half। T half life is equal to 1 by
रेट कांस्टेंट इनटू ए नॉट बाई टू, ठीक है। फर्दर मोर इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 by t half life concentration initial by 2. What does this mean? बेसिकली हमको ये पता चलता है मेरा रेट कांस्टेंट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ वैरी कर रहा है, इज इट राइट? द रेट कांस्टेंट इज वैरीइंग विथ या रेट कांस्टेंट नहीं समझना है तो ये इक्वेशन देख सकते हैं, ये दोनों ही बोल सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ this thing, the reaction half life of the reactant is varying with the initial concentration, ठीक है। initial concentration ज्यादा रहेगा तो हमारा half life ज्यादा रहेगा और initial concentration कम रहेगा तो half life कम रहेगा। zero order reaction में half life और initial concentration का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो it will look like concentration. So what are we going to get? It will be proportional, isn't it? Hello. It will vary directly with concentration of A naught or initial concentration. So it is going to look something like this. Maybe a straight line. I mean, what maybe? It is definitely going to be a straight line. The slope may be decided by the value of K which it is having or value of T half life which it is having. That is the reactant का nature, ठीक है। how fast or how slow it is reacting उसके ऊपर depend करेगा, but the nature of T half life and concentration, initial concentration, not only T half life, rather K also is or K is going to be ठीक है, it's going to be like this. यहाँ पर एक चीज, अगर T हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो स्लोप मेरा क्या रहेगा? स्लोप इज गोइंग टू इंडिकेट 1 by K अगर T हाफ लाइफ के साथ ले रहे हैं तो, और अगर K के साथ ले रहे हैं तो सॉरी 1 by 2K, ठीक है। और अगर हम लोग K के साथ ले रहे हैं तो the slope will be 1 by 2 half life. K versus concentration कर रहे हैं, initial concentration, so the slope will be, it's going to look again like this. The slope will be 1 by 2 T half life, ठीक है। यहाँ पर जीरो ऑर्डर है तो K का यूनिट क्या होगा? यूनिट के बारे में तो मैंने बता दिया था, ऑर्डर पर डिपेंडेंसी रहेगी, आई थिंक जनरल एक्सप्रेशन लिखा था कि नहीं मैंने? ठीक, लिख दिया है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होगा मोलर पर सेकेंड, तो दैट इज ऑलरेडी गिवन।
यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोलर पर सेकेंड, ठीक है, और मोल पर लीटर सेकेंड। सो ये तीन ग्राफ जो हुए हमारे पास, जैसे concentration and time, rate and initial concentration, rate and concentration का मतलब initial concentration actually होता है, rate, initial concentration and variation of half life with initial concentration या rate constant with initial concentration, ठीक है। These plots are going to tell me about the nature of the rate kinetics which is being, or rate law which is being followed by the reactant, ठीक है। Let us investigate about, like, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, एंड देन वी विल गो इनटू द नेक्स्ट टाइप। एंड नेक्स्ट टाइप के बाद चीजें आप लोग को थोड़ी ज्यादा क्लियर होने लगेंगी, क्योंकि उनमें चारों ये ग्राफ जो मैंने अभी प्लॉट किए, दे आर गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली, इट्स गोइंग टू बी एंटायरली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, ठीक है। सो विल हैव अ लुक एट इट। लेट मी पुट अप दिस क्वेश्चन। The concentration reactant decreases from 5 molar to 3 molar in 1000 seconds. Two molar to 1 molar in 500 seconds. Find the time taken when we start the reaction with 0.5 molar concentration to fall down to fall down to 0.05 molar.
तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने 2-3 चीजें एक साथ दे दी हैं, इसमें ऑर्डर बिल्कुल नहीं दिया है मैंने, ठीक है। अब ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर 3 चीजें सीखी, इसको अप्लाई करना होता है। पहला क्या चीज सीखा हमने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कहीं से भी चालू करें और रेट जो होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, कंसंट्रेशन का डिक्रीज जो है विद टाइम दैट इज गोइंग टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम वैल्यू होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन सेम वैल्यू रहता है तो माय लाइफ इज सेट, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। We can directly say that this is a first order reaction and accordingly I can work on it. या फिर हाफ लाइफ अगर दिया हुआ है या हाफ लाइफ का वेरिएशन दिया हुआ है तो हाफ लाइफ वाला यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, I'll give you another problem जिसमें वो एस्टैब्लिश होएगा। तो हाफ लाइफ के ग्राफ्स वगैरह के बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ या फिर के यूनिट के बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ। These are 3-4 थिंग्स जिसके बेसिस पर मैं रेट लॉ को एक्सक्लूसिवली डिफाइन कर सकता हूँ, राइट, या एक्सक्लूसिवली मैं निकाल सकता हूँ रेट लॉ। सो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है और उसको टाइम से डिवाइड करके रेट निकाल करके आई कैन फाइंड आउट वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर और नॉट, ठीक है ना। सो विल यू गाइज लाइक टू सॉल्व इट? सॉल्व करना है, should I solve? Ganesh? सो देखिए, जब कंसंट्रेशन 5 से 3 मोलर पर आता है तो तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन will be final concentration A final minus A initial divided by time taken, and obviously इस पर एक माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको हम ये डायरेक्टली लिखें A ऑफ इनिशियल, चूंकि ये रिएक्टेंट है हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है माइनस डी ए बाई डी टी, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, ये
फॉर्मूला, और इससे हम ये चीज फाइनली लिख सकते हैं ए फाइनल बाई टाइम टेकन। नाउ रेट ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी 5 minus 3 by 1000, that is 2 by 1000 molar per second. रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड केस में क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी अगेन ए इनिशियल माइनस ए फाइनल कर सकते हैं, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल माइनस ए फाइनल बाय टाइम टेकन। तो ए इनिशियल क्या है मेरा 2 to 1 हो रहा है in 500 seconds, so it becomes 1 by 500. Is it okay? This is also 1 by 500. So that means the rate of the reaction is not changing with time. ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, या इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ भी चेंज नहीं कर रहा है, सेम रेट ऑल द टाइम मेंटेन कर रहा है। वेदर वी आर स्टार्टिंग विथ one initial concentration या second initial concentration, it is changing by same amount or the rate of change is same. That means it is a first order reaction. It is a first order reaction, and for such reactions our this particular thing is going to be followed, that is At is always going to be given as A naught minus Kt, ठीक है, और K क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आया, सेम आया, और ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा, यही हमारा रेट कांस्टेंट होगा। व्हाई इट विल बी द रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, वी नो दैट, राइट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर 0, ठीक है, यानी रेट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट, ठीक है, तो हमारा रेट कांस्टेंट यही वाली वैल्यू होगी। अभी इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा यहाँ पर क्या है, 0.5 मोलर है, फाइनल क्या होना है, 0.05 मोलर होना है। So I'll put these values. This is 0.5 molar and this is 0.05 molar and this is minus Kt. Solving for time t, we are going to get ये इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, Kt को इधर लेकर के आएंगे, उल्टा लेंगे। At time t it is 0.05 m and initial concentration is 0.5 molar. So it is going to be 0.5 minus 0.05 divided by K. This is 0.45 divided by 1 by 500. This will make 0.45 into 500 seconds, that is 225 seconds. Is it okay? Is this clear? Yes, sir. Rate of the reaction, rate of the reaction is going to be directly proportional to concentration of reactant to the power 1, ठीक है,
ये इक्वेशन ये फॉलो करना चाहिए. That means rate, that is minus differential of dA with respect to time should be directly proportional to concentration to the power 1. 1 लिखने की जरूरत नहीं है. और this can also be written as minus d of A into dt is equal to A. ठीक है. We can solve it further. ये dt को मैं इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. will become dA और obviously A को इस तरफ लेकर के आऊंगा. So it will become differential of A divided by concentration of A is equal to minus K into D. Sorry, minus K into dt. Okay. I can integrate it again. इस चीज को इंटीग्रेट कर सकता हूँ बिटवीन ऑब्वियसली 0 to t और यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन E नॉट रहेगा और यहाँ पर कंसंट्रेशन Et हो जाएगा. So this is nothing but ln concentration of E ranging between A naught to Et एंड ये हो जाएगा माइनस K3 नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर हमारे पास आया लास्ट में E minus ln E naught is equal to माइनस KT या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ln KT by ln by A naught is equal to minus KT. That implies KT by A naught is equal to e to the power minus KT to the power minus K into T या फिर concentration of A is equal to concentration of A naught into E raised to the power minus. Okay, this is how it is going to be or it is going to look like. Now we will investigate one by one about its nature of 2-3 parameters which we have or which are of key importance to us. Okay. पहला चीज जो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे द ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली वैरी कर रहा है, राइट. तो
इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट का प्लॉट जो होगा दैट इज गोइंग टू लुक लाइक व्हाट, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन passing through zero, will look like this. Is it okay? And here the slope is going to be, इन दोनों का slope जो होगा that is going to give me what? Rate constant, slope is equal to rate constant. Making sense? इसको और इसको प्लॉट करते हैं, इसको और इसको प्लॉट करते हैं, तो it is going to be equal to k. Second thing is initial concentration or rate के बाद the next thing which we need to know is initial concentration, the concentration with time, how the concentration is going to vary with time. That is of another, that is another important thing which I need to know. So time variation of concentration of reaction concentration. So ये अगर हम लोग ठीक से देखते हैं यहाँ पर सेकेंड पेज पर आते हैं, so it is AT is equal to E naught minus A. Time t is equal to 0 पर it is going to be E naught, and as the time progresses, time positive रहेगा. This e to the power minus kt will become lesser than 1. ठीक है, a naught को किसी lesser than 1 number से multiply करेंगे, that is going to give a2, that kt will decrease or it will be lesser than a naught for any time. टाइम को जब हम बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे कंसेंट्रेशन हमारा कम होता जाएगा. It is going to look something like this. This is called exponential decay curve. This is my initial concentration and it is going to look something like this. This sort of curve. Yeah. This is called exponential decay curve. Exponential decay curve. And it is very much prevalent at many places. Physics में we can have a look at it. Current का decay, AC सर्किट वगैरह में, या फिर LC सर्किट में, और सॉरी LC बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस के अंदर डीके ऑफ चार्ज या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या डीके ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर, और so that is also going to follow the exponential decay curve. ठीक है, और ये हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का डीके जो होता है that follows decay exponential decay curve. They all are first order reactions or they are first order processes and they all are going to follow this particular ठीक है, मतलब सिर्फ कैपेसिटेंस और चार्ज का रहा वेरिएशन तो इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑर्डर. बाकी जो दूसरे हो जाते हैं जैसे एलसीआर में करंट का वेरिएशन जो होता है दैट बिकम्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, उसमें सेकेंड डेरिवेटिव भी रहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी रहता है. सो ठीक है, और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ चार्ज भी रहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज भी रहता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर रहता है. और ये वाले सारे एक्सपोनेंशियल डीके कर्व को फॉलो करते हैं एंड दे आर गोइंग टू हैव सिमिलर नेचर. तो ये दो चीजें हुई. अब फिर हम लोग हाफ लाइफ को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं. ठीक है, हाफ लाइफ कैसा है? Is it depending upon initial concentration or not depending upon initial concentration? Is it a constant? Yeah. और दूसरी चीज yes, half life with या फिर रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंसी कैसा है,
initial concentration. So when I'm talking about half-life, I'm going to calculate the time for A naught, A naught पर, ठीक है? So for this reaction, it's going to be basically AT will be equal to A naught by 2, and therefore इसको अगर यहाँ पर प्लेस करते हैं तो it will simply become A naught by 2 is equal to A naught e raised to the power minus AT, या लास्ट स्टेप से थोड़ा सा पहले यहाँ पे रख लेते हैं अगर हम लोग, तो इस स्टेप में रख लेते हैं तो इट कैन बी मोर कन्वीनियंट, या एक ही बार में हो जाएगा. So it is going to be ln concentration of Ag by A naught. So that implies ln A naught by 2 divided by A naught is equal to minus 3. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, it will simply become ln 1 by 2 is equal to minus 3, or this 1 by 2 can also be written as minus ln is equal to minus 18. Minus minus cancel हो जाएगा, it becomes sin is equal to ln 2 by ln 2 जो होता है that is equal to 0.693 by k. That means half-life, peak half-life is equal to 0.693 by k. That means it is independent of half-life is independent of initial concentration or concentration terms. Yes, similarly, rate constant is also independent of uh, concentration terms. So I can plot a curve for half-life and initial concentration. Okay. How is it going to look like?
हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हम प्लॉट करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ line parallel to x-axis. ठीक है, that means half life is totally independent of whatever concentrations you are going to take. It is not going to alter or not going to differ. ठीक है, half life initial concentrations they are going to have hand in hand relationship. This is not going to be dependent on initial concentration or it is independent of initial concentration. This shows that अगर ये हमारा characteristic रहता है तो फिर I can directly say that my order of reaction is first order. ठीक है, if half life of my process is independent of initial concentration, then I can easily say that it is a first order reaction. If that is not the case, जैसे पिछले वाले केस के लिए अगर मैं हाफ लाइफ पूछता, अगर क्वेश्चन में हाफ लाइफ भी दिया होता ठीक है निकालने के लिए, तो अलग अलग टाइम के लिए जैसे जब 5 मोलर से हम चालू कर रहे हैं तो हाफ लाइफ जो होता वो मेरा क्या होता, कुछ और होता। हाफ लाइफ मतलब 5 से 2.5, तो 2.5 डिवाइडेड बाय ये जो टाइम रेट कांस्टेंट है हमारा 1/500 उससे डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 2.5 बाई 500 1/500 करते हैं 1250 आता है जब 5 मोलर से चालू कर रहे थे। 2 मोलर से 1 मोलर आने के लिए ऑब्वियसली रिलेटिवली हमको कम टाइम लगता, तो टी हाफ लाइफ जो होता वो 500 सेकेंड्स हो जाता। हेलो हेलो, इज इट बेटर? वेट वेट, हेलो हेलो, is the voice clear now? Danish, how is the voice now? Danish, hello. Danish, how is the voice now? सर मेरा नेटवर्क का इशू है। मेरा अभी भी कट होके ही आवाज आ रहा है, नहीं मतलब वो ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर हाँ इसके लिए हाफ लाइफ देखने जाते हैं तो अगर 5 से 0.25 आना होता तो द टाइम टेकन वुड हैव बीन 1250 सेकेंड्स। 2 से 1 आने के लिए इट्स 500 seconds, 0.5 से 0.25 आने के लिए the time period is going to be much lesser, it is going to be 125 seconds only। ठीक है, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा हाफ लाइफ जो है वो चेंज कर रहा है, राइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के साथ ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर वन जिसमें हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, सो ये 3 इन्वेस्टिगेशन या ये 3 ग्राफ जो हैं ये हमारे लिए काफी क्रूशियल होते हैं। अच्छा, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी वजह से या रेट कांस्टेंट भी इंडिपेंडेंट रहेगा, हाफ लाइफ बोल लें या रेट कांस्टेंट बोल लें। सो
और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा यहाँ पर सेकेंड. देयर वोंट बी एनी कंसंट्रेशन टर्म्स एज सच. ठीक है. वो लेट मी पुट वन क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू इट. और हाँ, टी हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट इस तरीके से रिलेटेड होता है, ये हमको ध्यान में रखना होता है. ठीक है ना. और इस प्रोसेस के लिए मीन लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, स्पेशली मीन लाइफ, दैट इज समथिंग which we need to know. Mean life of first order reaction is nothing but mean life 1/k रेट कांस्टेंट को हम लोग मीन लाइफ बोलते हैं या मीन लाइफ होता है. इसमें मीन लाइफ जो आता है कैलकुलेट होकर के, दैट इज इक्वल टू 1/k, एंड दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. This 1/k is also equal to T half by 0.693, which is equal to 1 point is 1.44 into T half life. So ये दो इंफॉर्मेशन होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं. If half life of a reaction is 20 seconds and independent of initial concentration ठीक है, and the time taken for a reaction to decrease its concentration from its concentration from its from के बदले by 1000 times. ठीक है.
या फिर इसको ऐसे भी दे सकते हैं फ्रॉम मे बी 10 मोलर टू 0.01 मोलर। सो इसके लिए अगेन लाइक इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बोला जा रहा है। हाफ लाइफ अगर इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, सो ये एक इंडिकेटर है कि माय रिएक्शन इज व्हाट, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। The moment it happens to be a first order reaction, we now know that the concentrations at time t and initial concentration can be peacefully related like this: minus kT, where k is the rate constant, and in this case the half life is given as 20 seconds. तो k क्या हो जाएगा? K is going to be equal to 0.693 divided by half life, ठीक है, और 0.693 divided by 20 per second। इसको कर लेंगे हम लोग, तो दिस इज गोइंग टू बी ln फाइनल इज 0.01 divided by 10, और इट इज 1 by 1000 टाइम्स से डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन। तो ऐसे भी डायरेक्टली 1 by 1000 लिख सकते थे, या ये कंसंट्रेशन रेशियो लिख करके भी 1 by 1000 हम कर सकते हैं। दिस इज माइनस k, that is 0.693 by 20 into time. This is what I have to calculate. This becomes ln 1 by 1000, or it is minus 3 ln 10। माइनस कर लेंगे तो ये 1 by 1000 का 1000 हो जाएगा, एंड 1000 इज नथिंग बट 10 to the power 3, वो 3 इधर आ गया, सो इट बिकम्स माइनस ln 10 minus 3 ln 10 is equal to minus 0.693 by 20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट, या टाइम t जो होगा दैट विल सिंपली बी इक्वल टू 20 into 3 ln 10 by 0.69 and this much seconds. Is it okay? अब इसको सॉल्व करना है, तो ln 10 जो होता है दैट इज इक्वल टू 2.30, ठीक है। ln 10 इज नथिंग बट पॉइंट, ln 10 की वैल्यू जो होती है 2.303, पर करेक्टली यही वैल्यू होता है ना। लेट मी जस्ट चेक, हाँ 2.303। सो this is going to be 20 into 3 into 2.303, and ये divided by 0.693। actually 693 जो होता है ना 0.693, that is product of 2.303 into 0.3, yeah। so ये दोनों को डिवाइड करेंगे and it will become 0.3, इसको कैंसिल करेंगे and this will become 200 seconds, yeah। so that is how it is going to be। the time taken to decrease by 1000 times will be 200 seconds। अब मैं एक और काम करता हूँ आप लोग के लिए, छोटा सा होमवर्क, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्टिगेट। 1000 टाइम्स डिक्रीज करने के लिए 200 सेकेंड हुआ, 100 टाइम डिक्रीज करने के लिए, 100 टाइम्स डिक्रीज करने के लिए कंसंट्रेशन टाइम्स डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज ऑफ concentration will require how much time? Will require time equal to, ठीक है। 100 टाइम डिक्रीज मतलब
10 मोलर से 10 मोलर टू 0.1 ये आने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना है, ठीक है। So this is a work you have to do and then we will continue from here in the next page. Okay.